Hello students, after completion of double consonants PL series, PR series and SPR, आज हम करेंगे special use of double consonants. In a special group of words, the double consonant strokes are used although a distinct vowel comes between a consonant and hook L or hook R. स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो डबल कॉन्सोनेंट साथ में आ रहा था, जैसे वो पी के साथ आर आ रहा था। अब स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट ये है कि इसके बीच में, मतलब आर और एल हुक और कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल आएगा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स आर एम्प्लॉयड in order to secure briefer और more facile outlines, जिससे वो बहुत ब्रीफ बने और मोर फैसाइल बने, लिखने में आसानदायक बने, ऐसे आउटलाइन हम सीखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वर्ड्स आर गिवन बिलो, इससे रिलेटेड गिवन नीचे दिए गए हैं words. Although it is seldom necessary to vocalize these special outlines, a dot vowel may be indicated by a writing a small circle instead of a dot. अब जहाँ पे डॉट वॉवल की साउंड आती है हम वहाँ पर डॉट लगाते हैं, लेकिन अगर बीच में वॉवल आ रहा है बी और आर, पी और आर के, बी और आर के, तो क्या करेंगे, उसको एज अ स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर हम डॉट की प्लेसिंग करते थे, आइदर ऑन फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। क्लियर है। आइदर आफ्टर और बिफोर द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, उसके पहले या बाद में। जैसे भी हम डॉट वॉवल प्लेस करते थे वैसे ही हम ये सर्कल, उसकी जगह पर ये सर्कल यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर आर हुक और कॉन्सोनेंट या एल हुक और कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल आएगा। ठीक है, एज इन पार्सल। ठीक है, पी और आर के बीच में आ का साउंड आया तो हम उसको एज अ डॉट ना लगाकर एज अ स्मॉल सर्कल यूज करेंगे ऑन द सेम प्लेस, एज इन पार्सल। पर सीरीज above the line, a circle upward L, small dot used here on the first place of per series after it. Darling, dar series above the line, upward L, ng stroke. Same small circle is used here on the place of dot vowel after dr series. Dark, dr above the line with k. Okay, small circle is used here on the place of dot vowel on the first place of dr series after it. Charm, jr above the line with m. Small circle instead of dot on the first place of char after it. Direct, ठीक है, ई का साउंड है, direct. Dir through the line, k halved for the sake of t here, and put the small circle instead of dot on the third place of dir before it, and light dot on the second place of dir after it. Directly, same direct जैसी outline बनेगी and upward L is used here, and after that light dot on the third place of upward L is used here after it. Next is the short e. Vowel is never indicated in words like, मतलब जिसकी बिल्कुल ही माइनर सी साउंड है, मतलब साउंड पर्सन, तो पर जैसा ही साउंड कर रहा है, तो उसमें कोई भी हम वॉवल नहीं लगाएंगे, ना ही सर्कल यूज करेंगे। ठीक है, पर्सन, क्योंकि उसमें साउंड नहीं आ रही, पी और आर के बीच में कोई भी वॉवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, एज ए लाइट ई वॉवल है, तो उसके लिए हम कोई भी वॉवल प्रेजेंट नहीं करेंगे। पर सीरीज, पर ऑन द लाइन ए सर्कल एंड स्ट्रोक एंड लाइट डैश ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ एन बिफोर इट। गर्ल, गर ऑन द लाइन से स्टार्ट करते हुए अपवर्ड एल। टर्म, टर ऑन द लाइन विद एम स्ट्रोक ऑन द लाइन। क्लियर है।
नेक्स्ट, अब ये बात करी हमने डॉट वॉवल्स की, अब हम बात करेंगे डैश वॉवल्स की. हाउ टू रिप्रेजेंट डैश वॉवल्स व्हेन इट कम्स बिटवीन द हुक एंड द कॉन्सोनेंट. A dash vowel or a diphthong is shown by writing the vowel sign or diphthong sign through or at the beginning or end of the stroke. उसको कैसे उसके साथ ही प्लेस करेंगे. जैसे फर्स्ट प्लेस पर आएगा तो उसके फर्स्ट प्लेस पर उसको कट करेंगे, ठीक है. सेकंड प्लेस पर कट करेंगे. सिमिलरली थर्ड प्लेस पर क्या आएगा, डिफ्थोंग आएगा, तो उसको थर्ड प्लेस पर कट करेंगे. एज इन कॉलेज, कल, के विद एल हुक अबव द लाइन विद जे, एंड क्या, राइटिंग द वॉवल साइन. इसका वॉवल साइन डैश वॉवल ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑफ कल बिफोर इट, क्योंकि फर्स्ट प्लेस है तो इससे पहले ही लगेगा. एंड लाइट डॉट ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ कल आफ्टर इट. नेक्स्ट इज अकॉर्डेंस. कर हाफ for the sake of D here. N stroke S circle above the line whole outline. Dash vowel is used here on the first place of कर. And firstly accordance, तो पहले वाला a dot vowel on the first place of कर, then dash vowel, then next third vowel on the first place of N before it. Next accordingly, सेम है. अकॉर्ड बनाया, एन जी स्ट्रोक एंड डाउनवर्ड एल अबव द लाइन होल आउटलाइन. सेम अ का डॉट वॉवल ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑफ अकॉर्ड बिफोर इट. डैश वॉवल ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑफ अकॉर्ड. Dot vowel on the third place of ng stroke before it, and third place dot vowel on the third place of downward L after it. Next is course. Curve with a circle on the line, cut on the middle with the heavy dash vowel for the sake of O vowel. Clear है. Next is coat. Curve halved here for the sake of T, and heavy dash is used here on in the middle to cut the core. Curve series for dash vowel. Okay, O, ठीक है. Church, chur on the line, another ch is used here, and light dash cut here on the second place of first chur for the sake of dash vowel. Clear है. Next is occurred. Cur above the line halved here for the sake of D, and first place light dash on the first place of occur before it. And क्योंकि ये वाला वॉवल है, स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट बीच में आ रहा है, तो लाइट डैश कट करेगा ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ अकर. नेक्स्ट इज रिकॉर्ड. अपवर्ड आर and cur is halved here for D, and light dot on the second place of upward R after it, and light dash on the first place of cur, cut here on the first place for the sake of a sound. Record a sound. Okay. Purchase. Per and che with a circle, and light dash cut here on the second place of per here, and light dot on the second place of j after it. Correct. Cur, another k and t on the line whole outline, light dash on the second place of first cur cut here, and light dot on the second place of another k before it. Collect. सेम आउटलाइन है, ओनली क्या, कर की जगह कल हुक यूज हुआ है, एल हुक यूज हुआ है. कल के एल हुक with another k and t on the line, a light dash on the second cut here on the second place of kal, and light dot on the second place of another k before it. Courtesy. Cur, t on the line, and s stroke through the line जाएगा, and heavy dash से cut होगा courtesy, and on the second place of cur here, and a light dot on the second place of t after it, and light dot on the third place of s after it. Next is attorney. Attorney. Tur above the line, n stroke whole outline above the line, light dot on the first place of tur before it,
and light dash on the second place, cut here on the ter series, and light dot on the third place of n after it. अब ये आ गया diphthong के examples. lecture, L on the line से start करते हुए K and ter series, light dot on the second place of upward L after it, and diphthong cut here on the third place of ter series for the sake of ter. Clear है? Literature, through the line से start करते हुए upward L, another TR series, letter and last वाला क्या, ट्योर. वैसे ट्योर होता है इसलिए ऐसा लिखते हैं, तो हम चर पढ़ते हैं. लिटरेचर, थ्रू द लाइन से स्टार्ट करते हुए अपवर्ड एल, टर, अनदर टर, लाइट डॉट ऑन द थर्ड प्लेस ऑफ फर्स्ट टर बिफोर इट, लाइट डॉट ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑफ फर्स्ट टर after it, and diphthong, u diphthong is used here on the third place of second ter cut here. Lectures, same outline as in a lecture, बस क्या एस ज्वाइन होएगा और यू डिप्थोंग क्रॉस ना करके उसके बॉटम में लगेगा. क्लियर है? डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस, रिगार्ड एंड रिग्रेट. ठीक है, दोनों का सेम साउंड करता है इसलिए उसको अलग अलग लिखते हैं और याद रखते हैं. अपवर्ड आर ऑन द लाइन से स्टार्ट करते हुए अपवर्ड आर, गर हैव फॉर द सेक ऑफ डी हियर, light dot on the second place of upward r after it, and first place dot, small circle is used here on the first place of gur after it, and this is regret, distinctive outline. Regret, upward r, gur and t on the line, light dot on the second place of upward r after it, and light dot on the second place of gur after it. सो दीज आर द नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी इसकी डिक्टेशन. आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ड्रॉप अ लाइक, शेयर, कमेंट.